Myself BL Deepan, HOD Electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सब्जेक्ट ELF 204 EDC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की यूनिट 1 के टॉपिक PN जंक्शन के अंतर्गत आज उसका सब टॉपिक एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं वापस जो कि प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ P and N टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है P टाइप के सेमीकंडक्टर का। दिस इज द एक्सेप्टर लेवल EA, दिस इज द फर्मी लेवल। P टाइप के सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल लाइज इन बिटवीन EA एंड EVP, whereas in N type semiconductor the donor level ED और ECN यानी कि कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल के बीच में लाई करता है फर्मी लेवल ऑफ द N type semiconductor, whereas in case of intrinsic semiconductor Fermi level lies exactly in between conduction band and valence band, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप के बीच में फर्मी लेवल लाई करता है। N type semiconductor Fermi level lies in between ECN and ED, whereas in P type semiconductor Fermi level lies in between EVP and EA। तो ये जो फर्मी लेवल शिफ्ट हुआ है, दिस इज ड्यू टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड। Similarly, in case of P type semiconductor, this is the acceptor level, and this level is created due to the addition of trivalent impurity into the semiconducting material. एनर्जी बैंड डायग्राम P टाइप और N टाइप का सेमीकंडक्टर का है। P टाइप में EFP और N टाइप सेमीकंडक्टर में EFN। So Fermi level are at a different level in both the P and N type semiconductor। P और N को जब आपस में ज्वाइन करते हैं, when we bring P with the N just before the equilibrium establish होने से पहले जो एनर्जी बैंड डायग्राम है PN जंक्शन का, this is like that। These are electrons which are in N type semiconductor। These are the holes places which lies in the valence band of the P type semiconductor। So this is the flat band energy band diagram। This is the condition of the energy band diagram of a PN junction just after combining them, and यानी कि in equilibrium condition, this is the energy band diagram। The principle of operation will be explained using a Gedanken experiment, an experiment which is in principle possible but not necessarily executable in practice। We imagine that one can bring both semiconductor regions together, aligning both the conduction and valence bands energies of each region। This yields the so-called flat band diagram that is shown in the previous figure। यानी कि जो दोनों के एनर्जी बैंड डायग्राम को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जब आप P को N से कंबाइन कर रहे हैं, तो इनिशियली वी अज्यूम दैट वी आर अलाइनिंग देयर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, नॉट दैट दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली अलाइन द फर्मी एनर्जीज EFP and EFN। Also note that this flat band diagram is not an equilibrium diagram। ये जो ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में जो एनर्जी बैंड डायग्राम की जो कंडीशन है which is called as flat band diagram is not an equilibrium condition। It is not an equilibrium diagram since both electrons and holes can lower their energy by crossing the junction। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूजन के कारण जब आप ज्वाइन करेंगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू होगा, और डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू होने से इलेक्ट्रॉन्स और होल जंक्शन को क्रॉस करेंगे due to the concentration gradient। The motion of electrons and holes is therefore expected before
thermal equilibrium is obtained. The diagram is called a flat band diagram. This name refers to the horizontal band edges. It also implies that there is no field and no net charge in the semiconductor. इससे ये इस डायग्राम से ये कंक्लूड होता है कि there is no field at the junction and there is no net charge in this semiconductor. Energy band structure of an open circuited PN junction. Consider that a PN junction has P-type and N-type materials in close physical contact at the junction on an atomic scale. Hence, the energy band diagrams of these two regions undergo relative shift to equalize the Fermi level. Fermi levels को equalize करने के लिए इनके जो कंडक्शन बैंड एंड दोनों तरफ जो कंडक्शन में वैलेंस बैंड जो है उनके बीच में रिलेटिव शिफ्टिंग will takes place. The Fermi level E should be constant throughout the specimen at equilibrium. Equilibrium condition में throughout the PN junction Fermi level should be constant. यानी कि P साइड में भी Fermi level वही होगा जो N साइड में होगा. Fermi level constant रहेगा throughout the PN junction device. The distribution of electrons or holes in allowed energy states is dependent on the position of the Fermi level. If this is not so, electrons on one side of the junction would have an average energy higher than those on the other side, and this causes transfer of electrons and energy until the Fermi levels on the two sides get equalized. यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद में दोनों तरफ जो है वो फर्मी लेवल एक सेम लेवल पर एस्टेब्लिश हो जाएगा. Such a shift does not disturb the relative position of the conduction band, valence band and Fermi level in any region. ये जो शिफ्टिंग हो रहा है वो P साइड में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी. Equalization of Fermi levels in the P and N materials of a PN junction is similar to equalization of levels of water in two containers on being joined together. ये उसी प्रकार है जैसे हम दो कंटेनर जिनमें अलग अलग लेवल पर वाटर है उनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं. तो आफ्टर ज्वाइन करने के बाद में कुछ टाइम बाद में दोनों के अंदर लेवल बराबर हो जाएगा. तो सेम will happen in this case. So this is the energy band diagram of a PN junction divide in open circuit condition. This is the space charge region. This is the conduction band in P region which is higher than the conduction band in the N side. यहाँ पर जो E1 शो कर रखा है, this is the E2. E1 and E2 these are dependent on doping in the P region and N region. If doping are same, then E1 and E2 will be equal. If doping are different, for example, doping is high in P region, then E1 will be small and E2 will be high. And E1 plus E2 will be equal to E0, which is the potential barrier or contact potential at the junction. This is ACP, this is and this is EVP. Similarly, this is ECN, this is EVN. Where the Fermi level EF is closer to the conduction band is ECN in the N-type material, while it is closer to the valence band is E in the P-type material. It is clear that the conduction band is ECP in the P-type material is higher than the conduction band is ECN in the N-type material. Similarly, the valence band is E in the P-type material is higher than the valence band is EVP in the N-type material. E1 and E2 indicates the shift in the Fermi level. E0 equal to E1 plus E2, which is equal to ECP minus ECN, which is equal to EVP minus EVN. The energy E0 is the potential energy of the electrons at the PN junction and is equal to QV0, where V is the contact potential in volts or contact difference of the potential barrier potential. So these are equations which are related to
this open circuited energy band diagram, E0 equal to